Hi everyone, I hope you guys are preparing hard for your examination. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि मुझे लगता है हर कोई एस्पिरेंट ही फेस करता है व्हेन ही और शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन। बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और उस सेल्फ डाउट में हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, कैन आई डू इट? बट मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट क्वेश्चन इनटू हाउ कैन आई डू इट, इंस्टेड ऑफ आस्किंग आवरसेल्व्स कैन आई डू इट। सेल्फ डाउट तो आएगा, सबको आता है, टॉपर्स को भी आता है, हमेशा से आता रहा है। बट हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म दैट क्वेश्चन इनटू समथिंग दैट गिव्स अस पावर, समथिंग दैट गिव्स अस एनर्जी, something that gives us fuel to prepare better for the examination. That is transforming the question of self-doubt of can I do it into how can I do it. कैसे करना है? बहुत सिंपल 4 स्टेप्स दूंगा आपको और उसके एंड में I will be telling you a go-to book that you can use to prepare well for the examination, जो आपको बार बार इंस्पायर करती रहेगी. And I will also be telling you some tricks that I use on my phone, जिससे कि मैं ज़्यादा फोकस्ड रह पाता हूँ और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ. एंड आई कैन ऑल्सो टीच बेटर टू यू गाइस. तो ये क्या 4 पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दीज 4 पॉइंट्स एंड देन वील कम टू माई फोन एज वेल एज माई बुक. द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज m इज इक्वल टू f. जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हमें हमेशा से याद रहा है, इस तरह से यू कैन ऑल्सो रिमेंबर फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स m इज इक्वल टू f. What do you mean when you say m is equal to f? It's very simple. Mobile phone is equal to failure. Mobile phone is the biggest drug and the biggest distractor of our lives in the present scenario. Smoking, heroin, cocaine, कितने भी ड्रग्स उठा लीजिए, उनसे ज्यादा बड़ा ड्रग है ये. And the funny part is that it's in the hands of every individual on this earth. So, if you as an individual want to crack the examination, want to beat the competition, want to be better version of yourself, want to improve every day, want to get your focus back, want to do everything possible which can help you get that rank, you have to understand that mobile phone is equal to failure. Once you have got it in your head, once you've realized it, only then you can get rid of the mobile phone. Mobile phone से छुटकारा कैसे पाना है, दैट ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू वेरी शॉर्टली सेकेंड पॉइंट के अंदर. बट ये समझना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मोबाइल फ़ोन के बिना पढ़ेंगे कैसे, लैपटॉप नहीं है. मोबाइल फ़ोन को बेच दो, 15,000 में डेस्कटॉप लेके आ जाओ, मिल जाएगा. नेहरू प्लेस में जाओगे, थोड़ा पुराना मिलेगा, मिल जाएगा. थोड़ा कम पावर का मिलेगा, लेकिन वो ऐसा बना के दे देगा आपको सो दैट यू कैन स्ट्रीम वीडियोज़, सो दैट यू कैन स्टडी यूजिंग MS Word एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड दैट इज़ वॉट यू नीड. आपको गेमिंग थोड़ी करनी है. गेट रिड ऑफ योर मोबाइल फोन. 500 रुपए का USSD मोबाइल फोन भी मिलता है मार्केट में, वो भी यूज कर सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दिस, अदरवाइज m is equal to f is going to destroy your life. Let's come to the second point now, which helps you solve the problem of m is equal to f. क्योंकि मोबाइल फोन से छुटकारा तो नहीं पा सकते. अल्टीमेटली यू विल हैव अ फोन इन योर हैंड. आई ऑल्सो हैव अ फोन इन माई हैंड. कहीं ना कहीं वो हाथ में टेबल पे रहता ही रहता है. खुद का नहीं होगा तो मॉम का होगा, डैड का होगा, भाई का होगा, बहन का होगा, गर्लफ्रेंड का होगा, वाइफ का होगा, हस्बैंड का होगा, किसी ना किसी स्पाउस का होगा, किसी का भी होगा. हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट लेटिंग दैट मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय योर लाइफ? बहुत सिंपल है. स्केड्यूल बनाना जरूरी है. दैट स्केड्यूल विल रिजल्ट इन मोनोटनी. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. स्केड्यूल इज इक्वल टू मोनोटनी, बट दैट मोनोटनी कैन ओनली गेट यू सक्सेस. जिस पॉइंट पे तुमको लगने लगे कि यार बहुत बोरिंग हो गया है, आई एम नॉट एबल टू फोकस, लेट मी डू समथिंग एल्स, एट दैट टाइम रिमाइंड योर सेल्फ मोनोटनी इज इक्वल टू सक्सेस. मोनोटनी आने लगी है मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ. दैट इज अ गुड इंडिकेशन. नाउ हाउ डू यू यूज योर मोबाइल फोन, और हाउ डू यू मेक श्योर दैट द मोबाइल फोन डज नॉट कम इन द वे ऑफ दिस? स्केड्यूल ब्रेक ना करने दे आपका मोबाइल फोन आपको. वो कैसे इंश्योर करें? व्हाट आई डू इज वेरी सिंपलिस्टिक. मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट करता हूं पढ़ना, जिससे मैं आपको 9 बजे क्लास होती तो 9 बजे पढ़ा सकूं. किसी दिन शाम को क्लास होती तो आई कैन टीच यू इन द इवनिंग. बट आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे बाई 6 AM. 6 AM to 9 AM ये मेरा पहला स्लॉट होता है. एज अ टीचर ऑल्सो टू दिस डे आई फॉलो दिस वेरी रेगुलरली. 6 AM to 9 AM पहला एक स्लॉट बनाते हैं.
जिसमें पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, whatever the situation is, but this is the most productive time for me. You might be a person who wants to study at night. ये slot रात में भी हो सकता है. Okay, you can change it according to your needs, but the point is सबसे ज़्यादा productive time जो है उसमें 3 घंटे का slot सबसे पहले बनाना ज़रूरी है. Then I create another slot 10 AM to at least 1 PM. 3 घंटे का एक और स्लॉट बनाया मैंने, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, मेजॉरिटी ऑफ माई स्टडिंग एंड टीचिंग इज डन इन दीज 6 hours. मैं पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ 6 घंटे में. तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाना आपको है नहीं, आपको पढ़ना है बस, तो आप 6 घंटे में पढ़ सकते हैं आराम से. Therefore, what you do is, for these 7 hours from 6 AM to 1 PM, you are away from your phone. आपका फोन ऑफ है, या किसी दोस्त के पास है, या दूसरे रूम में अलमीरा में है, आपकी मॉम के पास है, आपके फादर के पास है. इन दिस टाइम पीरियड यू कैन नॉट यूज योर फोन. आपके हाथ में फोन होना ही नहीं चाहिए, आपको एक्सेस ही नहीं होना चाहिए. यू स्विच ऑन योर फोन एट 1 PM. जितना डोपामिन चाहिए उतना डोपामिन इकट्ठा कर लो 1 बजे के बाद. 1 PM to 8 PM, दिस इज योर डोपामिन टाइम. जितना करना है कर लो, पूरे 7 घंटे डोपामिन इकट्ठा करना है वो भी कर लो. आफ्टर एन आवर यू विल गेट रेड ऑफ इट ऑटोमेटिकली बिकॉज यू विल गेट बोर्ड ऑफ इट. 1 PM to 8 PM is your phone time. This is your schedule and monotony time. इस monotony को maintain करना बहुत important है. Only this will bring you success. And finally, switch off your mobile phone at 8 PM, जिससे कि you can sleep by 9 PM or 10 PM so that you can get up at 6 AM. अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना जरूरी है. That is the only trick. You want to get up early in the morning, you want to start your day early, you sleep at the right time. And to sleep at the right time, you need to switch off your phone at the right time. कोई emergency नहीं आती है रात में, कोई आती भी है तो your parents are there, your friends are there, there are a lot of people around you that can help you out, that can communicate with you. ये एक दिमाग का भ्रम है. This is a misconception that we have created. Our phone has created it for us कि मुझे ऑफ मत करो, कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? आई एम सो important for you, but it is not so important. Therefore, the second point is, if you want your mobile phone not to be your reason of failure, then first of all, you create a schedule. You let that schedule create monotony, because that monotony will result into success. And the best monotony, the best schedule that you can create if you're a morning person is this: 6 to 7 hours of study. After that, you do whatever you want to do with your life, but switch it off at the right time, switch it on at the right time. That's it. That's the only thing that you need to do. Let's come to the third point, timetable. Now, this is something that we have not been taught since we were kids. हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाया, कॉलेज में नहीं सिखाया कि बेटा एक्सेल में कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, उसको कैसे फॉलो किया जाता है. So this is something that you have to start doing from now onwards, either Excel or Google Calendar. Excel is the best for me also. To this date, I also use Excel with different color codings. And it's super easy. थोड़ा experiment करोगे अपने आप समझ आने लग जाएगा. There are tons of videos on this YouTube channel जहाँ पे मैंने बताया है और अपना खुद का टाइम टेबल भी दिखाया है कि इस तरह से मैं आपको अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पढ़ाने वाला हूँ. टाइम टेबल has to have components of daily, weekly and monthly targets. पहले आप अपने आप को एक मंथली टारगेट दोगे कि इस मंथ में मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस कंप्लीट करना है. फिर आप अपने आप को एक वीकली टारगेट दोगे कि उस मंथ के कंप्लीशन के लिए मुझे हर वीक इतना सिलेबस कवर करना ही करना है. एंड देन यू विल गिव योरसेल्फ अ डेली टारगेट कि डेली मुझे इतना कवर करना ही करना है. What you can do to improve your productivity and to maximize it, and what I do is I always give myself 110% target. मैं 100% नहीं देता हूँ, 110 देता हूँ. 130, 140 दूंगा तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा. So I give myself a little more than what I can do in a day. और उस प्रेशर में मैं आराम से 100% टारगेट अचीव कर लेता हूँ. If I give myself 100%, then I'll be able to achieve only 90% or 80%. So I always give myself a target of 110%, which is a little more than what I know I can do. And my brain automatically adjusts, it is able to achieve 100% because उसको लगता है कि अभी ये भी करना है तो अभी जल्दी से खत्म कर लेते हैं ये वाला टारगेट, then I'll pick up the other one. And by the time I'm done with that target, my day is over, my productivity is over, I'm already exhausted. So you can do this as well. Give yourself 110% target, especially daily.
टारगेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आपकी कैपेसिटी से, सो दैट यू कैन पुश योर सेल्फ, सो दैट यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव. दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू फॉलो. द फोर्थ वन इज फोकस. क्वेश्चन यहां पे आता है कि फोकस लेके कैसे आना है. देखो, फोकस आता है बहुत छोटी छोटी चीजों से. फोकस अगर आपको चाहिए तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो. द मोमेंट डिस्ट्रैक्शंस गो आउट, द रूम इज फिल्ड विद फोकस. इट्स एज सिंपल एज दैट. फोकस इज ऑलवेज देयर. अगर ये आपका ब्रेन है, पूरा ये स्टूडियो ब्रेन है, तो इसमें फोकस ऑलरेडी है. इट्स हेयर एंड देयर, लाइंग हेयर एंड देयर. बट देयर इज सो मच मोर डिस्ट्रैक्शन इन दिस रूम दैट यू आर ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय दोज डिस्ट्रैक्शंस. शाम को दोस्त के साथ जाके बैठ जाते हैं, 2 घंटे गप्पे मार लेंगे. दैट्स फाइन इफ यू आर डन विद योर डेली टारगेट्स, बट नॉट फाइन इफ यू आर नॉट येट डन विद योर डेली टारगेट्स. अभी फोन उठा लेता हूँ आधा घंटे 5 मिनट, या अरे इससे बात करनी थी, भूल ही गया, अभी बात कर लेता हूँ, फिर पढ़ लूंगा. These are distractions. The bubbles of focus that you have in your room are much lesser than the bubbles of distractions. So the only thing that you need to do is to get rid of these bubbles of distractions. Push them out of the room. The moment you push them out of the room, आपका room खाली हो गया, बहुत space हो गई, तो you're much more comfortable, your brain is emptier, and you can easily see focus points. I'll give you an example of how do I do it very, very shortly. Especially what I do is, मैं अपने डिस्ट्रैक्टर्स को यूज करता हूं फोकस क्रिएट करने के लिए. तो मैंने एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट पकड़ा, एंड आई सी दैट ओके, दिस इज क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन फॉर मी, दिस इज डिस्ट्रॉइंग माई लाइफ, let me transform it, let me tweak it a little in such a way that I can use it for my focus. This is where again phone comes in. The biggest distractor, the biggest drug that you can ever have in the market is right here. Now what do I do to transform this distractor into something that creates focus? मैं पूरे दिन पढ़ लिया, पढ़ा दिया, फ्री हो गया शाम को. I think that I want to go for a walk, get my focus back. बट फ़ोन साथ में रख लिया, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अभी फ्री है तो फ़ोन का एडिक्शन ऑलरेडी है, वो कहीं जाता नहीं है. सो आई कीप माई फोन इन द नेम ऑफ म्यूजिक और whatever. बट बाय द टाइम आई स्टार्ट वॉकिंग, आई रियलाइज कि फ़ोन बज रहा है, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल. या फिर मैं फ़ोन चलते चलते फ़ोन साथ में यूज़ कर रहा हूँ, आई एम व्हाट्सएपिंग, आई एम डूइंग दिस और दैट, आई एम डूइंग टन्स ऑफ थिंग्स विद माई फोन, एंड आई एम नॉट एबल टू बी इन्वॉल्व, नंबर वन, विद माई वर्कआउट, विद माई वॉक. Secondly, I'm getting distracted. This is not what I should be doing. I want my focus back, and all these things are taking away my focus. So what I do is I use my distractor to create focus. Very simple. So I go on YouTube. ये आपको YouTube दिख रहा है. YouTube पे जाके instead of a very simple technique, I think there is everybody should be doing it. Instead of just scrolling through all these irrelevant things that I see, I've created a tag for myself which is news, and automatically YouTube has understood that I like watching or listening to news on a regular basis or at this time period. So when I start walking, I just go on this tag and I start listening to all these news. It might be too long, it might be an hour long, it doesn't matter. It just helps me get my focus back. It just helps me stay in the zone of the examination, that I have to do this, that I cannot be distracted by random things which are not relevant to me. They might be fun, but they're not relevant. And this can also be fun if you actually start listening to them with interest, rather than as something that you have to do. Okay, so this is how I try to turn my phone into something that gives me more focus rather than distracting me. It is difficult, believe me, it is not easy, because it's very easy to go to that other tag of something fun and to start listening to that or watching that. And you end up wasting your entire productivity, your entire focus, and you have to start building it over again. But if you want to crack this difficult examination or anything in your life, then you have to maintain your focus. And that is possible only when you turn your distractors into focus points, because the reality is that there are so many distractions in our lives nowadays that it's virtually impossible to get rid of everything. Therefore, it's important that you turn those distractors into focus points. Let me come to the last point of this session today.
wherein I want to share this book with you guys. Now, it's very popular already. It's there on YouTube. The speech is there. It's called Make Your Own Bed by Admiral William McRaven. Now, when I saw this book, I was like, okay, another self-help book, very thin one. So let me just go through it. It's not going to be very heavy. It's not going to take a lot of my time. But then I realized when I started reading it that it has so much more than what the speech talked about. It is much more detailed in simple words, in less number of words. It provides the right kind of advice. It provides the right kind of motivating points and things that you can do. Not only things that you can listen to, but things that you can do. So I would recommend that everybody should get it on Amazon पे खरीद लो जाके खरीद सकते हो तो start reading it and read one chapter every day and start following it. I belong to a military school. मैं बचपन में military school में पढ़ता था तो I can relate to it very well because I've gone through all these things that the admiral here talks about. But धीरे धीरे क्या होता है जंग लग जाता है हमारी बॉडी को. So we need to keep reminding ourselves, our body, our mind, that this is what we need to do. And these are the best people that you can learn from because they have experienced the toughest circumstances that you can live in or that you can die if you do anything wrong, any small mistake and you're dead. Therefore, it's worthwhile to learn from them, to use the small techniques that they have used, and finally, to understand how their mind works and try and inculcate those habits so that your mind also works in the same way. Okay, I hope this small piece of advice will help you. I always keep my book. The best part is it's so small, I can always keep it anywhere I want. And whenever I'm sitting empty, I'm not doing anything, I just open it. I read any random chapter. It takes about 10 to 15 minutes to read any chapter. And I found something new. I always end up finding something new in every chapter that I read, even if I've read it a number of times before. So this is something that I believe very strongly that can help you, that can motivate you in the right direction, and that can transform your thought process from can I do it into how can I. I know I can do it, but I just want to figure out how can I do it. What am I doing wrong? What am I doing right? How can I transform myself? How can I make success? I'll see you very soon, guys. With this, I come to the end of this session. Study hard. Jai Hind.